The new coronavirus, Covid-19, has many of us glued to the news, concerned for loved ones and adapting our lives to deal with the changes the pandemic is having on our homes, schools, and workplaces. It's pretty tough. A lot of systematic inequality has been exposed as the realities of the pandemic response set in. It's easier for some people to deal with the crisis than others. We need a society where we truly take care of one another and the only planet Earth we've got. We need an economy and society transformed to make us more resilient, driving changes in the ways we live, work, and get around that promote positive environmental and health outcomes. We need systematic solutions to these kind of protection gaps and problems. In the meantime, we can keep our community connections strong and model the behavior we want our leaders to adopt and show them that love and compassion are stronger than fear. This pandemic has revealed just how interconnected the world is, and if a country has a very high level of infection, then it's likely to spread to other countries as well. Even with travel restrictions, multiple tests and quarantine, infections can still leak out, and if a traveler has come from somewhere where the virus is very prevalent, they have a higher chance of taking the virus with them. The harrowing scenes from India have shocked the world as the country struggles with soaring cases of COVID. But the outbreak isn't just a crisis for India, it's a crisis for everyone. The virus doesn't respect borders or nationalities or age or sex or religion. And what's playing out in India now, unfortunately, has been played out in other countries as well. But there is another concern with India's high infection rates variants. A new variant has emerged in India called B1617. It's been dubbed by some as the double mutant because of two key mutations on the spike of the virus. There is some lab evidence that suggests it's slightly more transmissible and that antibodies may find it harder to block the virus, but scientists are still addressing how much immunity is lost. But the higher the number of COVID cases a country has, the more likely it is that the new variant will emerge. That's because every single infection gives the virus a chance to evolve. The way to limit viral variants emerging in the first place is to prevent the virus replicating in us. So the best way to control variants is actually to control the global amount of disease that we have at the moment. Lockdowns and social distancing measures will do this, but vaccination is also vital. This is happening slowly in India. So far, less than 10% of its population have had the first dose of the vaccine, and less than 2% are fully vaccinated. This is despite the fact that it's home to the world's biggest vaccine manufacturer, the Serum Institute of India, and this is another reason why India's surge in cases has a knock-on effect for the rest of the world. इंसानियत पर जो ये हमला हुआ है, उसकी सूरत आज नहीं तो कल बदलेगी, बदलनी चाहिए। मैंने आज से पहले इस देश को इस तरीके से नाशों के तीर में बदलते देखा, इतने असहाय कभी नहीं। एक देश के तौर पर, इंसान के तौर पर, डेमोक्रेसी के तौर पर हम पूरी तरीके से निकम्मे, भ्रष्ट और बर्बर साबित हो चुके। उनमें से हर एक आदमी अपनी नस्लों में गिरा हुआ है। हम सब किसी अदृश्य शक्ति की मदद की उम्मीद में। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ कोई प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई अफसरशाही नहीं है, और सबको अपने अपने हाल पर छोड़ दिया गया। मैंने इससे पहले
पिछले 40-45 साल में डॉक्टरों को बिलख बिलख कर रोते हुए नहीं देखा। अब किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, वो कहते हैं हमको मेडिकल प्रोफेशन से चिढ़ हो गई, हम इस दिन के लिए तो इस पेशे में नहीं आए थे। ऑक्सीजन के बिना अपने पेशेंट को तड़प तड़प कर मरना डॉक्टरों की नींद उड़ा दे रहा है। और आप यकीन मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज से साल भर बाद हमारे डॉक्टर बहुत सारी मानसिक बीमारियों से लड़ रहे हैं। जो मौतें वो देख रहे हैं और जितने असहाय वो महसूस कर रहे हैं, उसके बाद जिस ट्रॉमा में वो जाएंगे, उसका अंदाजा हमको और आपको नहीं। इस देश को नर्क बना दिया, इस देश को दोजख बना दिया और हम सबको इतना बेचारा बनाकर छोड़ दिया गया जैसे हमारी कोई अहमियत नहीं। खैर, वो वक्त शायद गुजर जाएगा और जब ये गुजरा हुआ वक्त हमारे सामने आएगा तो मुझे नहीं मालूम मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर मनीष रहेंगे नहीं रहेंगे, डॉक्टर सोनू रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन जो लोग भी रहेंगे वो सोचेंगे कि इस दुनिया को और बेहतर होना चाहिए। वो सोचेंगे कि हमको हमारी आने वाली नस्लों के लिए मंदिर और मस्जिद के झगड़ों से ऊपर उठना चाहिए। वो सोचेंगे और सोचना चाहिए कि इस देश को मंदिरों, मजारों, मीनारों की जरूरत नहीं। हमको सोचना चाहिए इस देश को अच्छे अस्पतालों की जरूरत है, इस देश को अच्छे स्कूलों की जरूरत है, इस देश को अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, बिस्तरों और वेंटिलेटर की जरूरत है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश के हर मंदिर की दौलत को अस्पतालों के हवाले कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश की हर मस्जिद को अस्पताल में तब्दील कर दिया जाए? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इस देश में कोई मंदिर तब तक नहीं उठेगा जब तक कि उसके साथ 100 बिस्तर का अस्पताल नहीं बनाया जाए, उसके साथ कोई स्कूल अटैच। We really need to double down on vaccination as quickly as possible, or the virus is going to try and do everything it can to keep on spreading from person to person. Globally, the pandemic shows no sign of easing, with this virus devastating country after country. The situation in India is a bleak reminder that none of us will be safe until everyone is safe. We, during this pandemic, need to look after each other by forgetting about religions and sects and working together to emphasize each other and look after each other. As this virus doesn't see any religion, gender, or age. It's just after the humanity, and we can all fight against it by keeping the humanity alive. A request to everyone, please be kind to each other. Try to help each other out in this time of need. Even a kind ear helps. Thank you so much for watching.